Good evening to all of you. बेटा आवाज आ रही है आपको मेरी? Now my voice is audible. Good. One important message I want to give to all the students who are preparing for the competitive examination. During the preparation of the competitive examination, it is necessary to believe in yourself. Okay? खुद पे आपको भरोसा होना चाहिए कि हम कोई सा भी टारगेट, कोई सा भी मिशन अचीव कर सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है. जब आप खुद पे विश्वास रखते हैं तो आपका जो मोरल होता है बहुत हाई होता है. ठीक है, आपका मोटिवेशन बहुत हाई होता है. पड़ोस वाले रखे ना रखे, रिलेटिव चाहे रखे ना रखे, आप पे भरोसा, लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा. आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा. हम कोई सी भी जंग जीवन की जीत सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. आप कभी डिप्रेस और आप कभी डिमोटिवेट नहीं रहेंगे. आप हमेशा कोई भी जो आपने टास्क अचीव किया है या जो भी आपने गोल अचीव किया है वो फुल ऑफ एनर्जी से आप अचीव करेंगे. ये इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, तो अपने ऊपर भरोसा रखना. ठीक है, बिलीव इन योरसेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलो भाई टॉपिक शुरू करते हैं. लास्ट स्लाइड ये वाली थी. ठीक है, जहां पे हम लोगों ने देखा था कि किस कंट्री के पास कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं. सो यूएसए हाईएस्ट नंबर. ठीक है, फ्रांस सेकेंड नंबर. नेवरदलेस द इलेक्ट्रिसिटी produced by the France with the help of the nuclear energy is higher. Okay, that is approx 75%. Okay, with respect to the total energy produced in the France. ठीक है, now इंडिया का जो पोजीशन है that is 6th. Okay,
Now this report is as per the year that is 2019. ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं आपको याद रखना है. Now we will see Department of Atomic Energy. In short form, it is called as DAE. Okay. 1950s में इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिए इन सम एरियाज लाइक स्पेस, atomic energy and defense also. And at that time, these are the modern and the new emerging areas. ठीक है, ये उस समय के मॉडर्न और इमर्जिंग एरिया थे. तो इंडिया ने भी अपने इनिशिएटिव इन दोनों एरिया में भी लिया था. ठीक है, जो आज आप प्रेजेंटली जो इंडिया की आप पोजीशन देख रहे हैं इन दोनों एरिया में, चाहे वो एटॉमिक एनर्जी हो, ठीक है, चाहे वो स्पेस हो. ओके, नाउ इट इज ओनली ड्यू टू द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट इन 1950s. बेस वहां से बन गया था. और भाई नसीब है अपने देश का, उस समय एमिनेंट साइंटिस्ट भी इंडिया के पास थे इस फील्ड के, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो एटॉमिक एनर्जी हो. Can you name the eminent scientists in this field? Atomic energy, nuclear energy. Okay. होमी जहांगीर भाभा जी. Okay. होमी जहांगीर भाभा जी. Now, let's start our lecture. Okay. Now, this particular department was set up in 1954 under the direct leadership of the Prime Minister. Now, the main function of this particular department is to develop the nuclear technologies, okay? To develop nuclear technologies, nuclear power, its application in various fields. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो केवल वेपन्स बनाने के लिए और एनर्जी के लिए ही नहीं है. ठीक है, इट इज एप्लीकेबल इन डिफरेंट फील्ड्स. ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर है, मेडिसिन, इंडस्ट्रीज, बेसिक रिसर्च. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इंडस्ट्रीज. ठीक है, जहां पे न्यूक्लियर एनर्जी का यूज होता है. ठीक है, इट इज नॉट ओनली जस्ट लाइक दिस पर्टिकुलर एनर्जी इज यूज फॉर द वेपन्स एंड फॉर प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, in other areas also this particular energy is used. Okay, now also to encourage transfer of technology. ठीक है, to encourage the transfer of technology so that it should be also helpful for the socio economic development. ठीक है, ताकि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके. ओके, गॉट इट. नाउ also provide the necessary support, okay, in the field of the research and development in this area. These are some important functions of this department. India's atomic energy program. India's atomic energy program. This program was launched under the leadership of Homi Jahangir Bhabaji, and he was also known as the father of Indian nuclear program. Okay, he was also he was also known as the father of Indian nuclear program. The first nuclear reactor which was designed and constructed by the India, the name is Apsara, and India did achieve this particular achievement in 1956 in Mumbai. Okay,
The first nuclear reactor which was designed and constructed by the India was, the name is Apsara. And India achieved this target in 1956. After that, India enhanced his capability and developed different types of the reactor, okay, and commissioned also, such as Jarleen, Purnima, Dhruv, Kamini. These are the different types of the reactor which was developed and commissioned by the India. Okay. If you want, you can write the name: Jarleen, Purnima, Dhruv, Kamini. Now, this fact you have to remember. Kamini is a country's first large research reactor that use uranium-233 as a fuel. Okay. Kamini is the country's first large reactor which use uranium-233 as a fuel. ये हो सकता है मतलब एग्जाम में पूछा जा सके, ठीक है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है, स्टेट पीसीएस में मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी. ओके, इट इज फोकस ऑन स्टेट पीसीएस. नाउ द मेन ऑब्जेक्टिव, सी अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इट इज फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Our main focus is that only. ठीक है, to produce the electricity, helpful for the different fields, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल, इन्हीं सब डिफरेंट सेक्टर्स में ही मतलब कि हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को मतलब एक तरह से मेन ऑब्जेक्टिव, मेरा मिशन, हम लोग का यही मिशन है, टू डेवलप अवर न्यूक्लियर एनर्जी टू फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली. ठीक है, हम कोई मतलब कि ये नहीं कि वी डेवलप द मास वेपन्स ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स, हमने डेवलप कर लिया है, हम लोग कभी, ये मोटिव हम लोग का कभी नहीं रहा है. ठीक है, हमारा जो मेन मोटिव है, व्हाट इज आवर मेन मोटिव इज फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, अपना जो मेन एम है, ठीक है, ऑफ अवर न्यूक्लियर प्रोग्राम. नाउ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया. नाउ न्यूक्लियर पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, इट स्टैंड एट अ 4th पोजीशन. ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग. सबसे इंडिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें हाईएस्ट परसेंटेज अगर जाता है, इट इज फॉर थर्मल, ओके, देन हाइड्रो इलेक्ट्रिक, then renewable sources. At 4th position it comes to the nuclear power. ठीक है, it is necessary to remember. Now presently we have 22 nuclear reactors. ठीक है, हमारे पास जो presently 22 nuclear reactors are there in 8 nuclear power plants, and presently they have the capacity of 6,780 मेगावाट. ठीक है, जितना भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में प्रोड्यूस होता है उसमें जो न्यूक्लियर पावर से जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, इट रैंक 4th पोजीशन. एंड प्रेजेंटली वी हैव 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन ऑपरेशन, एंड इन दैट फ्रॉम द 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स वी प्रोड्यूस्ड 6,780 megawatt, but the amount is less. Okay, as you know very well, our demand of the electricity is enhancing day by day. ठीक है, हमारा जो डिमांड इलेक्ट्रिसिटी का डे बाय डे बढ़ता जा रहा है. ओके, सी फर्स्ट थिंग इज दिस. सेकेंड थिंग, डिमांड इज नॉट राइजिंग ओनली इन अर्बन एरिया बट ऑल्सो राइजिंग इन द रूरल एरिया ऑल्सो. ठीक है, क्योंकि अब रूरल एरिया में भी कॉन्सेप्ट आ चुका है कि 24/7 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए. ठीक है, बहुत सारे ऐसे रूरल थे जो पहले कनेक्टेड नहीं थे, नाउ दे आर वेल कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिसिटी, तो डिमांड डे बाय डे इनहेंस हो रहा है. ओके, दैट्स व्हाई
we have to enhance the our energy capacity. न्यूक्लियर पावर से जो एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है वो भी हमें इनहेंस करना है. दैट्स व्हाई गवर्नमेंट प्लान टू कंस्ट्रक्ट 12 more nuclear power reactors. Okay, 12 more nuclear power reactors, ताकि हम 2031 तक दिस पर्टिकुलर अमाउंट यानी 22,480 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके. ओके, बाय 2031 विद द न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर एनर्जी we can produce our electricity 22,480 megawatt electricity. ठीक है, because demand is enhancing day by day. Okay, now we will see the arguments in favor of the nuclear energy. ठीक है, as I told you earlier also, for every technology there is positive aspects also and negative aspects also. ठीक है, one school of thought support that particular technology and one school of thought always oppose that technology. This is always there. ठीक है, सबका कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पैरेलली इज देयर. Same thing is for the nuclear energy also. Some scientists, some school of thoughts want to go ahead with this particular technology. Another school of thought or scientist, or you can say different thinkers, don't want this particular energy to promote. So let's see the arguments. Now, as I already told you that nuclear energy come under the category of non-renewable source of energy, but it is also given the another name, that is the clean energy. Okay, oh, good. So see, presently we produce the electricity largely by the thermal power. Okay, now as you know that this thermal power plant is totally depend upon the coal. Okay, that's why it produces a large amount of the pollution. Okay, so यहाँ पे there are the two negative aspects are there. First, pollution is enhancing day by day, and also the coal, which is a fossil fuel, is depleting day by day. That's why India have to find out the alternative source of energy. Okay, now see, question can be rise over here that there can be the renewable source of energy are also there, like solar energy, wind energy. Yes, it can be there. Solar energy also can be there. Wind energy is also can be there. Even tidal energy can also be there. But their efficiency, and you can say, and their utilization is totally depend upon the weather conditions. And, or you can say totally depend upon the geographical location also. Okay, for example, solar energy, as you know very well, in the North India winters are also there, so the solar energy is not applicable. Even the solar energy is not applicable for the hilly areas also, or northeast. Okay, wind energy, you know very well, in India the winds are not flow at a high speed throughout the year. ठीक है, पूरे साल मतलब कि हाई स्पीड में विंड फ्लो नहीं करता है. ठीक है, विंड हार्डली फ्लो. एज अ रिजल्ट ये भी यूज नहीं हो सकता. ठीक है, सो these are the alternative, but these are the not a best alternative. Got it my words? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन आप उसको बेस्ट नहीं कंसीडर कर सकते अभी, क्योंकि भाई आपको भी पता है डिमांड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. ओके, डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, वो हमें फुलफिल करना है. ठीक है, थर्मल पे हम डिपेंड नहीं हो सकते, कोल हमारा कम होता जा रहा है.
दीज टू सोर्सेस, ठीक है, ऑप्शन है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन नहीं है. देन व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? बेस्ट ऑप्शन इज द न्यूक्लियर एनर्जी. दिस इज ओनली द बेस्ट ऑप्शन. ताकि जो हमारी नीड है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज अवर नीड, व्हाट इज अवर रिक्वायरमेंट, वी मस्ट फुलफिल दैट, एंड इट इज नेसेसरी. इट इज नेसेसरी ऑल्सो. ठीक है, बिकॉज सी इलेक्ट्रिसिटी required for urban area also, for rural area also, and especially in rural areas nowadays electricity requirement is more. Electric pumps are there, different machines are there, okay, harvesting machine, cultivating machines, small industries are there, so these require electricity. So this to fulfill this demand, to fulfill this gap, this is the one of the most suitable option. Okay, next, it is also the one of the important strategy to minimize our carbon emission. Okay, I already told you that in thermal power plant lot amount of the carbon emission is there, but with the nuclear energy utilization, this carbon emission we can reduce it, because it is considered as a clean energy. Okay, carbon emission is almost zero. Okay, next, see, solar and wind energy are the alternative, but these are not suitable throughout the year. Okay, that's why nuclear energy is the best option. I already explained it. Now, as you know very well, most of the most of the petroleum product, or you can say crude oil, okay, crude oil we used to import. More than the 70% of the crude oil we used to import from the different countries. Okay, 40% of the gases we used to import, and also 20% of the coal, which is consumption, we also used to import. So see the level of our import the fossil fuel. To minimize this particular area, okay, to minimize this particular area, nuclear energy is the best option. Okay, because nowadays most of the countries are using these products, but nuclear energy is limited. As I already explained you earlier, only limited countries having this technology. Okay, and the use of the nuclear material is also limited. Okay, because nuclear energy is, nuclear reactors are limited. Limited countries have the reactor, so that's why the use of the nuclear material is also limited. So this can be now explored as a high rate. That's why for the long-term perspective, nuclear energy is the best option. Okay, next. Now, as you know very well, our target is for economic growth is 7 to 8%, and also we want to become $1 trillion economy. So for the growth of the economy, the energy security is necessary. Okay, different type of the industries, manufacturing industries need the electricity, 24 hours electricity. Okay, it is important thing. It is important thing, because see every logic you have to understand, because all are connected. Okay, and these logic you have to write in mains if the question came according to this. Why presently India is focusing on the nuclear energy? So you have to explain it. Okay, see, for the economic growth of 7 to 8%, or to become the $1 trillion economy, the energy security is very necessary.
because energy is required, or you can say electricity is required for the different industries, okay, for the different manufacturing areas where 24 into 7 hours electricity is required. So आपको अपनी एनर्जी का जो सोर्स है उसको मतलब पूरा रखना है. वो जो गैप आपकी जो डिमांड और सप्लाई में जो गैप क्रिएट हो रहा है इसको फिल करना है. Okay, because not only the requirement is high creating in the industrial area, the requirement is also creating the high in the household also. Okay, both the area want the electricity. So to fulfill this gap, okay, to achieve the high growth, economic growth, nuclear energy is necessary. No other option is there. That's why India's focus is more in the nuclear energy. Got it? Nevertheless, there are some arguments are also there which are against the nuclear energy. Okay, which are against the nuclear energy. Now, cost of the production is very high. Definitely it is high because it is a modern and sophisticated technology. Okay, so construction of the nuclear reactor is very high. Even the purchase of the nuclear material is also very high. Only the limited amount of limited countries only produce the nuclear material. For example, can you name the country which produces the nuclear material? Australia, Canada, Kazakhstan. Okay, these are the some countries. Okay, limited countries are there which are producing the nuclear material. So that's why cost of production is very high. Okay, now at the global level, those countries which energy is depend on the nuclear energy, now their mood is changing. For example, France. Earlier, France have the maximum electricity generating from the nuclear energy. But nowadays, France want to reduce this dependency because of the past disaster in this nuclear reactor explosion is there. Okay. फॉर एग्जाम्पल जापान. ठीक है, कुछ सालों पहले जापान में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था. कैन यू नेम देम? कैन यू नेम इट? नो आइडिया. जापान में हुआ था भाई, बहुत फेमस था. नो, इट इज नॉट. दिस इज योर होमवर्क. राइट द होमवर्क. Name of the nuclear accident in the Japan. Okay, अभी कुछ साल पहले हुआ था. It is very important thing. This is your homework. Okay, so that's why due to that accident at the world level it was thought that though it is equally true the nuclear energy is best alternative for the energy source, nevertheless it is dangerous also, because you know very well in the nuclear reactor nuclear reaction is taking place. Okay, now if anything went wrong, if the explosion take place, the reaction you cannot control on the spot. It take lot amount of time. Okay, बहुत समय लगता है. आप ऑन द स्पॉट मतलब कि कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है, इट टेक लॉट ऑफ टाइम. ओके, और जब तक कंट्रोल करोगे डिजास्टर इज ऑलरेडी क्रिएटेड. That's why now the countries are changing its area, its interest. Okay, now they are moving towards the renewable sources, that is solar, wind, geothermal. Okay, extra. Okay, because they are safe, they are free of cost. एक बार सोलर पैनल इंस्टॉल कर दिया बस छुट्टी हो गई. ठीक है, आपको बार बार रॉ मटेरियल खरीदना नहीं पड़ रहा है.
क्योंकि सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन आपको भी पता है लाइफ से बड़ा कुछ भी नहीं, ठीक है। ओके, लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई these are safe for the human life and also for the environment also. Okay, as you know very well, when the nuclear disaster take place, it is not safe for the humans also, it is also not safe for the environment also. Okay, next, disposal of the radioactive material is also very critical and also very dangerous. Okay, भाई न्यूक्लियर रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, तो जो न्यूक्लियर वेस्ट जो होगा, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो वेस्ट होगा, ठीक है, आपको उसको भी तो सिक्योर करना है सही जगह से, आप उसको ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं छोड़ सकते। ओके, यू हैव टू प्रोटेक्ट, यू हैव टू dispose that nuclear waste very safely. Okay, you cannot left in the open environment, otherwise it will create another disaster. आपने एयर पोल्यूशन, यू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन बट यू इनहेंस द रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। ओके, अगर यही न्यूक्लियर वेस्ट को आपने कंट्रोल नहीं किया या आपने सेफ डिस्पोज नहीं किया, ठीक है, आपने एयर पोल्यूशन को तो कंट्रोल कर लिया भाई, थर्मल प्लांट्स को हटा के न्यूक्लियर प्लांट्स को लाके, ठीक है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल, बट रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इनहेंसेस, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस वेस्ट एंड मटेरियल must be disposed or must be under the proper observation, क्योंकि किसी रॉन्ग हैंड पे भी नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज इट विल क्रिएट द डिजास्टर, ठीक है। तो it should be done in a proper guidelines, proper safety, and definitely, as you know very well, for the implementing the proper guidelines, proper safety, it incurred another cost, ठीक है, वहां एक और कॉस्ट आ गया, got it? दिस थिंग, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया पास्ट में, ठीक है, जापान, इससे पहले रशिया में भी हुआ था, ठीक है। तो दोज एक्सीडेंट्स वर द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर द फ्यूचर, so that the country should not support this energy at the topmost level, ठीक है, ठीक है, आपको यूज करना है, लिमिटेड होना चाहिए, इट शुड बी यूज लिमिटेड वे, बट इट शुड बी नॉट यूज एट द टॉप मोस्ट लेवल। ओके, एंड एट लास्ट, लिमिटेड न्यूक्लियर मटेरियल। अभी जो लेवल आपको न्यूक्लियर मटेरियल का लग रहा है, प्रेजेंटली यू आर लुकिंग द लेवल ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल इज हाई ओनली बिकॉज इट इज नॉट एक्सप्लॉइटेड एज अ हाईएस्ट level, or just like a coal or petrol, you can say that. Once the exploitation of this material will be enhances and used at a topmost level, just like a coal and petrol, the one day will become that this nuclear material will also become exhausted, and at that time this nuclear reactor will of no use. Okay, got it? So these are the some arguments which are against the nuclear reactor, or you can say nuclear energy. Okay, now you can ask the question, sir, then how we have to write in the mains examination? Okay, if the question came like this, what do you think that whether India have to promote the nuclear energy or not to maintain its energy security in the future? What do you think? ठीक है, इंडिया को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी मेंटेन रखने के लिए, क्या इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी आगे प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? See, when these type of the question came in the mains, according to my point of view, follow the middle path. Okay, follow the middle path. Starting आप करेंगे, write the about the nuclear energy. Okay, 3-4 lines, present scenario of the
इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, इन डिफरेंट एरियाज, थर्मल से कितना होता है, हाइड्रो से कितना होता है, रिन्यूएबल सोर्स से कितना होता है, और न्यूक्लियर से कितना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, देन आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट 2-3, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर 2-3. Now conclusion. As I already told you that demand is enhancing day by day. Okay, demand of electricity is enhancing day by day. Now, the other alternative source of energy is solar and wind, but their use is limited. Okay, we cannot use these energy sources throughout the India. So to fulfill that gap, India have to promote nuclear energy, but with the proper guidelines and the proper standard and procedures, rules and regulations. Okay. While you using this particular source of energy, no compromise should be there on the standardness and the rules and regulations. Okay. Safety of the person is first. Safety of the environment is first. Then only we can achieve the target of economic development, social development of the country. Now, this way you have to write the answer. Got it? Any confusion? Because ultimately हमारा गोल क्या है? Economic development, social development, that is the only the goal. ओके और जब इन्वायरमेंट ही नहीं रहेगा, जब ह्यूमंस नहीं रहेंगे, उन्हीं की जान खतरे में है, अगर इन्वायरमेंट ही खतरे में है, एंड हाउ वी कैन गेट द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो फर्स्ट थिंग इज दैट टू प्रोटेक्ट देम. ठीक है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, वी हैव टू मूव. ठीक है, हम कर क्या सकते हैं, लेकिन नेवरदलेस वी कैन इंप्लीमेंट इट विथ प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोसीजर, विथ प्रॉपर गाइडलाइंस, ओके, with proper safety standards. Okay, now in these area only we can focus it. Okay, then only we can use this particular technology or particular source of energy very effectively and efficiently. Then only the India will get economic growth of 7 to 8% and achieve the $5 trillion economic in future. Got it? This way you have to conclude your answer. Any question? बेटा मैंने आपको बताया है ना कि for the economic growth it is necessary to fulfill the energy gap, or you can say you should fulfill the demand of the energy in different areas. ठीक है, different industries are there, different manufacturing industries are there, different refineries are there where the demand of electricity is there. Okay, तो वो जो डिमांड है आपको फुलफिल करना है. ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है आपको फुलफिल करना है, तभी तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. फॉर एग्जांपल अगर इंडस्ट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रहा है, डेफिनेटली दे विल नॉट अचीव द टारगेट. ठीक है, वो टारगेट को अचीव नहीं करेंगे. इवन द फॉरेन कंट्रीज विल नॉट इन्वेस्ट इन इंडिया ऑल्सो. ठीक है भाई, फॉरेन कंट्रीज को भी भाई क्या चाहिए भाई, अगर कोई फॉरेन की कंट्री आती है, अपना इन्वेस्ट करने, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, फॉरेन वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, सो दे वांट द बेसिक नेसेसिटी कि हमें ट्रेड का अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट अच्छा मार्केट होना चाहिए, गुड मार्केट शुड बी देयर. ओके, गुड फैसिलिटीज सच एज रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी शुड बी देयर, वाटर सप्लाई शुड बी देयर.
Okay, good labor laws. Okay, these type of the things international organization want, then they invest in India. Okay, then only the economic development will take place. अगर एनर्जी सोर्स ही नहीं रहेगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, तो आपको क्या लगता है ये जितनी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, whether they set up the plant in India? They will not set up the plant. Okay, because the basic thing, that is the energy source, they are not getting it. Okay, then if they will not set up the plant in India, then how will the economic growth will be there? Okay, that's why when this security is there and energy security is there, then they will invest in India. It will create the jobs. It will create the jobs also, and also the product which is manufactured in India will be utilized in India, and it will also get export to other countries also. In this way, we will get the revenue. Okay, in this way, we will get the foreign revenue also in the dollars. Okay, in this way, economic growth will take place. All are linked to each other. ये link आपको समझना होगा. ठीक है? Got it? Everything is linked. If one parameter is not there, other things are totally collapse. Got it? Next is nuclear doctrine of India. Now, it was first proposed in 1999, but it was officially accepted in 2003. And the basic principle of our nuclear doctrine is no first use. Okay, this is our basic principle. Okay, now let's discuss the following features. The first feature is we put a voluntary moratorium on the further nuclear test explosion. It means that we presently put a temporary ban on the nuclear test explosion. Remember one thing, this is a temporary ban. ये temporary ban है, ठीक है? It is a temporary ban. If in future India want to do the nuclear test explosion, India will do it. Got it? Second, no first use of nuclear weapon. Okay? During any crisis, during the war, we will never use the nuclear weapon at the first spot. Okay? If for example, कल पाकिस्तान से टेंशन हाई हो गया, दाग दिया न्यूक्लियर वेपन. ओके, इट शुड बी नॉट लाइक दैट. ओके, ये चीज आप ध्यान रखना. ठीक है, हमने कहा अपने डॉक्ट्रिन में हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन को पहले यूज नहीं करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट, we will also not use the nuclear weapon against the non-nuclear weapon state. Okay, this is state. ठीक है, अगर कोई कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो हम उसके अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन अपना यूज नहीं करेंगे. बट if that particular country uses the any disastrous weapon such as chemical weapon, biological weapon, or any more disastrous weapon, then in the retaliation India can use the nuclear weapon. Okay, got it? कि हम उस कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है. लेकिन अगर उस पर्टिकुलर कंट्री ने ऐसा कोई डिजास्टर्स वेपन का हम पर अटैक कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल, केमिकल, ठीक है, या कोई भी अगर मेजर अटैक, देन इंडिया हैव द ऑप्शन टू रिटेलिएट विद द न्यूक्लियर. ओके, नेक्स्ट, इंडिया विल एस्टैब्लिश मिनिमम क्रेडिबल न्यूक्लियर deterrence, means minimum number of the nuclear weapons, and this totally depend upon the need and the requirement of the our country. Okay, we will not produce the unlimited nuclear weapon. It totally depend on our need. हमारी नीड कितनी है, हमारी जरूरत कितनी है, हम उसी के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर प्रेजेंटली 100 है तो हम 100 करेंगे, फ्यूचर में अगर 200 होगा तो 200 करेंगे.
ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम उस नंबर को मिनिमम रखें, ओके, कम से कम हम प्रोड्यूस करें, ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आवर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, ओके. बट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिमेंबर कि ये जो पूरा जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है is based on the basic principle, that is the no first. Got it? Any confusion? Any question you want to ask? Good. So for today, these are the topics. Tomorrow we will continue from here. So thank you to all of you and have a nice day.